So let us start today with a new chapter, and that's related to civics. That's Indian democracy. Now, India has the highest number of voters in the world. That we have done earlier also many times. कि सबसे ज़्यादा वोटर अगर है तो वर्ल्ड में तो वो है इंडिया में and India is the largest democracy, of course. So, population wise, India is the largest democratic country of the world. This amazing democracy is more than 6 decades old. Matlab more than 60 years have passed where we have been enjoying our freedom, our democracy. And during this period in India, there has been many political upheavals and ups and downs. मतलब बहुत सारे political problems आए कभी there were ups and downs, problems came, challenges came, we overcame them. And the Indian democracy आज भी हमारी सस्टेन है, मेंटेन है, दैट इज ड्यू टू द डेडिकेशन एंड इंसाइट ऑफ इस सिटीजन. तो ये सिटीजन की वजह से, हमारे डिवोशन की वजह से, मेहनत की वजह से, हमारी इंसाइट की वजह से, मतलब कि जो एक हमारी समझ है हमारे लोगों की, उसकी वजह से आज भी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी मेंटेन रही है. एंड लेट्स सी अबाउट द or let's study in detail about the various characteristic features of an Indian democracy. So first is इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. अब ये इलेक्शन कैसे होता है, तो एक तो इलेक्शन प्रोसेस पूरा डिटेल में बताया गया है इस चैप्टर में. बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज इट रिलेटेड टू. इन द वर्ल्ड मेनी कंट्रीज आर डेमोक्रेसी. किसी के यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, तो अलग अलग टाइप की डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, एंड किसी की प्रेसिडेंशियल होती है. आवर कंट्री ऑफ कोर्स हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. In the world, many countries have democracy. In spite of democracy, there exist differences in the system of government of these countries. मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो देखो, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है. बट there is difference seen in the system of its governing. So there exist differences in the governance of these countries. In a democracy, a voter will give his vote. A voter casts his own vote. The right to vote remains the same in a democratic country. फिर वो US हो, इंडिया हो, कोई भी democratic country हो, right to vote is same. हर एक citizen of that country, each and every citizen of that country will have the right to vote at the time of election. Though the country's system of governance may vary, मतलब system of government may be different, but क्योंकि जितनी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे हर एक सिटीजन उस कंट्री के सिटीजन के पास राइट टू वोट तो होगा ही. द डेमोक्रेसी थ्राइव्स, दैट इज लिव्स, मेंटेन्स, सस्टेन्स थ्रू द वोटिंग प्रोसेस ऑफ द वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन. एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी जिंदा रहेगी एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जब तक कि इलेक्शन होंगे और वोटर्स के पास वोटिंग राइट होगी. Our country is parliamentary system. Parliament is the national institution representing the people. अब इस पार्लियामेंट में हमने 10 चैप्टर में डिटेल में किया है. राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेवल पे है विधानसभा, विधान परिषद. तो हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. And it's a national institution which represents our common people. The Parliament of India consists of, अब इस हमारे पार्लियामेंट में कौन होंगे? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है. As mentioned in chapter 10 of course in detail, that is in the earlier chapters. राज्यसभा is the upper house of the parliament, लोकसभा is the lower house of the parliament. स्टेट अभी मैंने बताया उसके पास विधानसभा है, विधान परिषद है. जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ये कंपलसरी होना चाहिए हर एक स्टेट के पास, लेकिन विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इक्वल टू राज्यसभा, वो हर स्टेट के पास नहीं होगा, कंपल्शन नहीं है. सो सम स्टेट्स हैव काउंसिल बट ऑल द स्टेट्स शुड हैव असेंबली, राइट? तो ये स्टेट लेवल का हुआ असेंबली एंड काउंसिल. असेंबली मतलब कंट्री लेवल का लोकसभा और काउंसिल मतलब कंट्री लेवल का राज्यसभा. प्रेसिडेंट कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नर, पीएम कंट्री लेवल पे, सीएम स्टेट लेवल पे. द स्टेट हैज
sorry, a voter is at the center in forming a Rajya Sabha, Lok Sabha, Assembly और Council. अगर असेंबली, काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा फॉर्म करना है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? वोटर. A voter is the center of all this thing in forming all these assemblies and council. In our country, all the governing bodies are elected through voting. हमारी कंट्री में थ्रू इलेक्शन, दैट इज थ्रू वोटिंग ही सारी गवर्निंग बॉडीज इलेक्ट होती है. Thus, democracy is realized by election. Let's see now about democracy and voter. A voter is very important part in a democratic country. Our country has universal adult suffrage. We have done this also in our 8th and 9th chapter, 10th chapter. तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब कि इंडिया में हमारे पास ये सिस्टम है और इसका मतलब हुआ कि 18 एंड अबव हर एक इंडियन सिटीजन को राइट दी जाती है टू कास्ट हिज वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स, एजुकेशन, एटसेट्रा. Important is universal adult suffrage means what is important? A person of 18 years of age or above who is enlisted in the voter list can cast vote. He can give his vote. लेकिन उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में. A person who is not declared bankruptcy or is not mentally unstable can vote without any discrimination. तो person जो mentally stable हो, जो bankrupt नहीं है, he can cast his vote without any discrimination. He has a right to vote. The Constitution guarantees a right to vote even amidst illiteracy. फिर वो illiterate हो तब भी वो वोट दे पाएगा. Amidst मतलब in between the factors cropping up like poverty है हमारी कंट्री में, illiteracy है, similar issues हैं, इस बहुत सारे many similar issues are there. Still the Constitution allows that Indian citizen to vote, right? So the Constitution guarantees a right to vote even amidst illiteracy, poverty, and many similar issues. The system of universal adult suffrage is based on the principle learn it, one person, one vote. So the principle of one person, one vote is very important. It's a duty of every citizen to vote without greed or fear. अब ये हमारी ड्यूटी है कि हमें राइट तो मिल गई 18 और अबाव विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोट. सिर्फ ये कि मेंटली हम स्टेबल होने चाहिए और बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए. बाकी कुछ भी हो, इलिटरेट हो, गरीब हो, कोई भी धर्म, एनी सेक्स, यू हैव द राइट टू वोट. सिर्फ इतना कि हमारा नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए. वी शुड बी इंडियन सिटीजन. तो वन पर्सन वन वोट. तो ये राइट हमें मिल रही है. अब ड्यूटी क्या है हमारे, हम इंडियन सिटीजन की, कि वोट करो तो विदाउट ग्रीड और फियर. A voter should be aware and alert, aware, that is vigilant of his right. हर एक इंडियन सिटीजन एज अ वोटर उसे अवेयर रहना चाहिए, विजिलेंट, अलर्ट रहना चाहिए अबाउट हिज राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ राइट टू वोट टू ईच ऑफ हिज सिटीजन without any discrimination of caste, color, creed, religion, education, sex, etc. etc. तो तुम कोई भी धर्म फॉलो करो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जात पात के हो, तुम इलिटरेट हो या लिटरेट हो, तुम पैसे वाला हो या गरीब हो, तुम गर्ल हो या बॉय हो, 18 and above, you have the right to vote. The Constitution gives us this right. So we should be aware and alert that this right is given to us and we have to go and vote. This is our duty. Voting is an important process in democracy. In our country, there is universal adult suffrage. Voting is a right as well as a duty of citizen. Every voter should exercise the right to vote. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ये राइट हमारा फॉलो करना है. Let's see foundation of democracy. Very, very important. Right? So let's move ahead. Election is a foundation of democracy. Foundation मतलब पिलर, बेस. एक बिल्डिंग बिना पिलर के खड़ी नहीं होगी. वैसे ही तुम्हारा नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये सारे बेस हैं. That will take you to the higher level in education. तो फाउंडेशन, पिलर, बेस, स्ट्रेंथ, रूट डेमोक्रेसी का क्या होगा? इलेक्शन. बिना इलेक्शन के कंट्री को तुम क्या कहोगे? नो, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अ फेस्टिव एनवायरमेंट, फेस्टिवल जैसा माहौल हो जाता है. इट्स सीन ड्यूरिंग इलेक्शन. Yes, when I go to give vote, that day I actually see early morning, ना तैयार होके फटाफट सबसे पहले पहुंच जाना है वहां पे. एंड ऑलवेज हमारा सेंटर आता है यहाँ पे, दैट्स मिनी उद्गम स्कूल ऑपोजिट राज स्टेशनरी, कामेश्वर स्कूल के सामने के साइड.
तो इट्स वेरी इट्स सो हैप्पी गो डे रहता है, एंड ऑल आर सो वेरी एंथू टू गो एंड गिव देयर वोट. सो दैट्स आवर ड्यूटी एंड इट्स अ राइट दैट वी हैव टू पिक अप दैट राइट. तो फेस्टिवल जैसा एनवायरनमेंट इज सीन ड्यूरिंग इलेक्शन. पीपल कैन इवेल्युएट द रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग इलेक्शन. इवेल्युएट मतलब कि हम जज कर सकते हैं और अब तक उन्होंने क्या काम किए हमारे लिए, क्या नहीं किए, जो प्रोमिसेस दी थी वो फुलफिल हुई या नहीं. दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन. तुम पूरा एक जांचोगे, तुम पूरा एक उसका इवेल्युएशन करोगे. इवेल्युएशन मतलब पूरी माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स जैसे ठीक से चेक करोगे. चेकिंग इट इज कॉल्ड. और फिर हम जाके उसे वोट देंगे. सो पीपल कैन इवेल्युएट देयर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग इलेक्शन. रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हमारी ओर से, हमारे लिए जो हमारे एरिया में खड़े रहें, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, जो उन्होंने प्रॉमिस दी है वो फुलफिल करने के लिए, हमारे लिए जो हमारे एरिया में हमारी तरफ से जो खड़े हुए हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए. और अगर वो जीतते हैं तो हमारी तरफ से वो जाके बैठेंगे असेंबली, काउंसिल या लोकसभा, राज्यसभा. राइट. द पीपल कैन judge their representatives during election. Any person who has a prerequisite to contest election can do so. Candidates belonging to the political parties as well as independent candidates who do not belong to any political party can contest election. जरूरी नहीं है कि अगर हम खड़े रहते हैं इलेक्शन में, राइट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ कैंडिडेट, तो तुम और मैं एग्जाम्पल अगर हम खड़े रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी के मेंबर होने चाहिए या कांग्रेस के मेंबर होने चाहिए या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हमें मेंबरशिप हमारी होनी चाहिए. एज एन इंडिपेंडेंट सिंगल कैंडिडेट ऑल्सो वी कैन स्टैंड, वी कैन हैव, वी कैन फाइट इलेक्शन, वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन. तो जरूरी नहीं कि हमें किसी पार्टी का मेंबर होना चाहिए. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं. इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट ऑफ एनी पार्टी और बिलोंगिंग टू द मर्जर, मिक्सचर, एडिशन, दैट इज कोएलिशन ऑफ पार्टीज कम्स टू पावर. ये 10th चैप्टर में बहुत डिटेल में हमने किया था कि जो पार्टी जीतती है उस पार्टी का लीडर बनेगा पीएम, स्टेट लेवल पे सीएम. नाउ अगर 2-3 सीट से अगर एक पार्टी, 2-3 नंबर्स ही चाहिए अभी उसे, तो वो 2-3 सीट छोटी मोटी पार्टी, सम अननोन पार्टीज को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे ज्वाइन हो जाओ, कोएलिशन कर लो हमसे. तो अब नंबर्स बढ़ गए तो वो पार्टी जीत जाती है. छोटी मोटी पार्टीज ऐड हो जाएगी उनमें और उनको कुछ मिलेगा भी उसके सामने. ऐसे तो कोई ज्वाइन होगा नहीं. तो डिस्कस कर लेते हैं बैठ के कि भाई हम आपके साथ ज्वाइन हो लेते हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर फील्ड दे देना, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें आप दे दो, या रेलवे डिपार्टमेंट, या एनी सा डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाला. तो ये सारा जब उनको मिल जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड तो वो ज्वाइन हो जाते हैं बड़ी पार्टी के साथ. और बड़ी पार्टी जब जीत जाती है तो उसके लीडर बन जाते हैं पीएम. In a democracy, only with the support of the people one can reach to power. एक आदमी पावरफुल बन सकता है, टॉप पे पहुंच सकता है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकता है कंट्री पे, बट किसी हमारे सपोर्ट के बिना नहीं. कॉमन इंडियन सिटीजन के सपोर्ट के बिना, या कोई और डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो वहां पे उस कंट्री के सिटीजन के सपोर्ट के बिना कोई भी पावर हाथ में, पावरफुल सीट तक नहीं पहुंच सकता. So, in a democratic country, only with the support of the common citizen of that country, one can reach to power. In our democracy, parliament is the topmost part, is the apex body, and the basic foundation block is gram panchayat. तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट हमारी कंट्री में टॉप मोस्ट है और लोएस्ट है रूट लेवल पे, विलेज लेवल ग्राम पंचायत. इलेक्शंस ऑल्सो हेल्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तो यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं. कैंडिडेट्स इन दिस इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर चोजन थ्रू इलेक्शन. अब यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं. कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाता है एट ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत थ्रू इलेक्शन. राइट. इन दिस इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो कैंडिडेट्स अपॉइंटेड थ्रू इलेक्शन. इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन म्युनिसिपैलिटी, इन टाउन्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज. तो इलेक्शन कैरी आउट होते हैं म्युनिसिपैलिटीज में भी, टाउन्स में और सिटीज में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में. इलेक्शन इज अ लाइफलाइन ऑफ अ नेशंस डेमोक्रेसी. हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शन उस कंट्री की डेमोक्रेसी की लाइफलाइन है.
बिना इलेक्शन के कंट्री डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी. Now let's move on to the next part. Continuity. Elections are very important for the political parties as well as candidate. तो बिना इलेक्शन के पॉलिटिकल पार्टीज होगी नहीं. अगर इलेक्शन नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही नहीं है. कोई एक ही राजा होगा. जब राजा का रूल होता था, कम्युनिस्ट पार्टीज होती है, सोशलिस्ट पार्टी होती है, तो वहां पे इलेक्शन की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि फिक्स है. मिलिट्री रूल है तो फिक्स है कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप रूल करेगा, ये पर्टिकुलर आदमी रूल करेगा. लाइक हिटलर के टाइम पे मिलिट्री रूल, there was no election. So elections are very important for political parties in a democratic country, as well as elections are important for the candidates. Election is a barometer scale, I would say measuring scale is a barometer of democracy. मतलब एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर वहां पे इलेक्शन है. और इलेक्शन कहाँ होंगे? अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. इलेक्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू जज द कंटेस्टिंग कैंडिडेट. इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है वोटर्स को टू जज द कंटेस्टिंग कैंडिडेट. जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसको जज करो, इवेल्युएट करो कि भाई इन्होंने कितने काम किए अच्छे इस कंट्री के लिए या हमारे एरिया के लिए, फिर उन्हें हम वोट करेंगे. So election provides an opportunity to a voter to evaluate the contesting candidates. Election ushers that brings in new political setup or political ways. तो election क्या लेके आ रहा है? एक new political setup लेके आएगा, new political waves लेके आएगा. Election gives a picture of a country's social economic environment. Election होंगे तो पता चलेगा कि उस कंट्री की सोशल हालत क्या है, इकोनॉमिकली एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है उस कंट्री का, डेवलपमेंट क्या है. Election decides the future of the government. Elections are contested by political parties, independent candidates, as I told you just now, as well as the merger of, the mixture of, as well as a coalition of political parties. So elections are contested by whom? By political parties, independent candidates, and by the merger of different political parties. In parliamentary democracy like ours, the party or the merger of parties having majority of winning candidates forms the government and comes in power. The power is obtained as well as maintained by the support of the people. अब हमारे सपोर्ट के बिना कोई भी पावर में नहीं रह सकता गवर्नमेंट में. इलेक्शन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. So election being the soul of a democracy, it is very important, it is essential that election should be transparent. कोई चीज छिपानी नहीं है. There should be no secrecy carried out during election. Everything should be very clear, transparent, right? Now let's move on to the public opinion in democracy. So let's see now what do you mean by the public opinion in democracy. मतलब कि तुम्हारा opinion as an Indian citizen, my opinion as an Indian citizen. तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों का ओपिनियन क्या है, राइट? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा ओपिनियन लिया जाता है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन रिप्रेजेंट द पीपल. अब जो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा. मतलब हम करोड़ों लोग पार्लियामेंट या जैसे लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेवल पे विधानसभा, विधान परिषद में जाके नहीं बैठेंगे. तो हमने जिनको जिताया है, जिस कैंडिडेट को, वो हमारी तरफ से जाके हाउस में रिप्रेजेंट करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा. इन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम रूलिंग पार्टी वुड लाइक टू रिगेन एंड रिटेन इट्स पावर. अब होता क्या है कि हमारे यहाँ की जो पैटर्न है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, वहां पे जो पार्टी रूल कर रही है, से भारतीय जनता पार्टी है प्रेजेंट, उसे यही चाहिए कि अगले 5 साल भी वो आए और उसके 5 साल बाद भी वही आए. तो पावर को वो रिगेन करना चाहेंगे और मेंटेन, दैट इज रिटेन करना चाहेंगे. बट टू रिगेन एंड रिटेन इज पावर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पीपल के साथ कनेक्ट करे फेस टू फेस, राइट? इसीलिए ये लोग भाषण देने निकलते हैं, अलग अलग जगह पे उनके स्पीच होती है, एक प्रोसेशन भी निकलता है, और मास मीडिया में जैसे टीवी पे भी वो आते हैं और लोगों के साथ पर्सनली एंड थ्रू मास मीडिया दे कीप इन टच विद अस, दे कनेक्ट विद अस. तो अगर पावर में, एक बार अगर पावर में आ भी गए, फिर वो पावर फिर से रिगेन करना है 5 साल के बाद, और फिर मेंटेन भी करना है, रिटेन करना है उस पावर को. तो कंट्रीज उन 5 सालों में भी उनको लोगों के साथ कनेक्शन रखना है. दे विल हैव टू कनेक्ट द पीपल
to maintain and run the government, it becomes important or essential to consider public opinion. और गवर्नमेंट को मेंटेन रखना है, आगे बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी है कि लोगों का ओपिनियन पहले कंसीडर करना है, उनके थॉट्स क्या है वो देखने हैं, उसको ध्यान में रखना है, लोगों को क्या चाहिए बिफोर द गवर्नमेंट frames the policies, rules and regulation for framing policies or for various questions related that is pertaining to many problem. और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रेज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू, जिसके बारे में भी क्वेश्चन रेज होते रहते हैं, फिर पॉलिसीज दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को पब्लिक का ओपिनियन और पब्लिक के थॉट्स को ध्यान में रखना है, अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों ने उनको जिताया है तो लोगों के लिए उनको रूल करना है, उनके वेलफेयर के लिए उनको रूल करना है। पब्लिक ओपिनियन इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमारा ओपिनियन बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमारे जो कैंडिडेट्स है, जो हमारे लिए खड़े हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए हम पब्लिक जरूरी है, पब्लिक ओपिनियन जरूरी है। कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेटिक कंट्री में collective public opinion is extremely important. Strong and organized public opinion is very important in democracy. अब ये public opinion कैसा होना चाहिए? Strong and organized. Malfunctioning of the government, malfunctioning मतलब wrong working, wrong functioning of the government can be presented through public opinion. Public अपने ओपिनियन के थ्रू पूरे देश या पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है या क्या अच्छा कर रही है. इट इज बोथ द वेज. तो लोगों का ओपिनियन बहुत जरूरी है. Public opinion helps in creating such a condition where the government cannot afford to misrule or neglect the country. A public opinion helps in creating such a condition, मतलब कि पब्लिक के ओपिनियन की वजह से गवर्नमेंट कोई रिस्क ले ही नहीं सकते कि भाई कंट्री को निग्लेक्ट करो या मिसरूल करो. प्रोमिसेस दिए हैं, ठीक है, आधे फुलफिल किए, आधे प्रॉमिस हवा में उड़ गए. नो, दैट कैन नॉट बी डन, क्योंकि आज की हमारी जनता बहुत ही जागरूक जनता है, alert है, that is aware है. Alert and intelligent public that keeps itself informed cannot be misguided or misled by the government. और गवर्नमेंट किसी को मूर्ख नहीं बना सकती, क्योंकि आज की जनता पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, अलर्ट है, अवेयर है. Various mediums in the modern times have proved to be very important in creating public opinion. और काफी चीजें पहले के हिसाब से आज की जनता इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इंटेलिजेंट तो है ही, पहले भी थे काफी इंटेलिजेंट लोग, लेकिन पहले के कंपैरिजन में आज लिटरेसी लेवल बढ़ चुकी है. पहले के कंपैरिजन में लोग आज ज्यादा अवेयर हुए हैं, और क्योंकि एजुकेशन ज्यादा है आज की प्रजा में, तो आज की जो हमारी जनता है, हमारे सिटीजन है, और दे हैव बिकम मोर अवेयर. और मास मीडियाज हैं आजकल, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से लोगों तक सारे न्यूज पहुंच जाते हैं. तो हमारा ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गवर्नमेंट को आगे ठीक से बढ़ना है. Various mediums in modern times have proved to be very important in creating public opinion. Let's discuss or let's obtain detailed information of these mediums. So, media of public opinion democracy. Public opinion in a democratic country like India or US कैसे लोगों तक पहुंचता है, और पब्लिक तक कैसे कंट्री के और गवर्नमेंट के न्यूज पहुंचते हैं. सो टू कल्टिवेट द ह्यूमन थॉट्स और साइक and to create a strong public opinion, various information broadcasting agencies are very useful. In today's time, various mediums are used to transmit information to the public. लोगों तक अगर मैसेज पहुंचाना है या लोगों के मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, तो आज काफी मीडियम, in today's time various mediums are used. Transmit means to send ahead information to the public, to provide information to the public. These mediums contributing to build or contributes to build strong and effective public opinion are. अब ये मीडियम जो strong and effective public opinion बना रहे हैं, build up कर रहे हैं, these mediums that contributes to build strong and effective public opinion are print media, and you will see one more media, right? There are two medias. So let's see. एक है print media like newspaper, etc. And the other one is electronic media like TV, and your smartphone and movies, right? So first, let's see print media. In today's world, newspaper, periodical, journals,
hold great importance, that is utmost importance in providing facilities to the people or in facilitating people to know more about the incidences. तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, periodicals हैं, journals हैं, ये इसका आज इम्पोर्टेंस इतना बढ़ चुका है क्योंकि एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, लिटरेसी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल के थ्रू उनको पूरे कंट्री के सारे इंसिडेंसेस के बारे में पता चलता है, इवेंट्स एंड सिचुएशंस जो कंट्री में हो रहे हैं, वर्ल्ड में हो रहे हैं, नेशनली, इंटरनेशनली, all those incidences, events and situations that are taking place, not only in our country but world over, वो लोगों तक पहुंचते हैं through print media. Print media helps people to evaluate. Once again, the same word, evaluation, judging, to create. So print media helps people to create their opinion either in favor or against the information presented by them. अब print media ये न्यूज़पेपर रीड करते हुए पता चलेगा, तो ये देखो न्यूज़पेपर हमारी करंट रूलिंग पार्टी को खराब भी बोलेगी, कई न्यूज़पेपर्स हैं तो उसका अच्छा भी बोल रही है. Now it depends on us whether we should be dragged away by the wrong information or no, or whether should be very much over happy by the good information or no. We have to keep our eyes open, take in the right message, क्योंकि प्रिंट मीडिया कई बार गलत मैसेज भी हम तक पहुंचाती है. तो जरूरी क्या है कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल, जर्नल्स वाले, दे हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, उनको लीडर होना है, फियरलेस. दे शुड नॉट बी अंडर ग्रीड या फियर कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आके बहुत सारे पैसे खिला दिए या उनको डराया धमकाया और उन्होंने उनके बारे में अच्छा लिखना शुरू कर दिया, तो फिर पब्लिक तक गलत मैसेज ही पहुंचेंगे. So we, in short, public have to be very much aware and alert. So the same information presented by the print media can create multiple viewpoints in the people. For example, for someone, one particular, just एक example एक टीचर का ले लो, किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छी है, तो वही टीचर किसी और स्टूडेंट के लिए ओके ठीक है, तो एक थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए वही टीचर हाँ बंगाल. This is how I keep on hearing since this many years from students. कोई कहेगा नहीं वो टीचर तो बहुत अच्छी है, कोई कहेगा नहीं शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, कोई कहेगा नहीं यार अच्छी है, पढ़ाती कितना अच्छी है, अरे नहीं यार क्या फट पढ़ा देती है. somebody will say टेस्ट नहीं ले रही, somebody will say बहुत टेस्ट ले रही है, कोई कहेगा लिबरल है, कोई कहेगा स्ट्रिक्ट है. This is the views of different people, different views. What we have to see is find out the truth. तो प्रिंट मीडिया तो न्यूज देती रहेगी, हमें मैसेजेस, इंफॉर्मेशन देती रहेगी. इट्स आवर ड्यूटी टू सी, टू ग्रैब इन, टू डाइजेस्ट द राइट इंफॉर्मेशन. People give different individual responses to same information and develop individually diverse opinion. एक्सीडेंट एक हुआ है, 10 लोग खड़े हैं वहां पे. अब अगर रिपोर्टर आके 10 को अगर पूछ रहा है कि भाई what had happened over here few hours back, एक कहेगा ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ, बस मैंने तो इतना ही देखा. वो वहां पे खड़ा था 1-2 घंटे तक, लेकिन उसने उतना ही, उसको मीन्स ही वाज लीस्ट बॉदर्ड टू यूज हिज आईज एंड ईयर्स एंड ब्रेन. दूसरे ने कहा हाँ कार में 4 लोग थे, ट्रक में कितने लोग थे पता नहीं. तीसरा थोड़ा और डिटेल कहेगा, चौथा कुछ और डिटेल कहेगा. सबने एक सेम देखा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, बट सबके अलग अलग व्यूज रिलेटेड टू द सेम इंसिडेंट. एक बिल्डिंग है, नया बना है, 10 लोगों के 10 ओपिनियन. एक कहेगा ओह इतना लंबा, बाप रे ना अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा. कोई और कहेगा ठीक है, ओके एवरेज कंस्ट्रक्शन है. एक कहेगा वाह क्या कंस्ट्रक्शन है यार. फोर्थ कहेगा वाह व्हाट बैल्कनी. फिफ्थ कहेगा अरे नीचे स्विमिंग पूल देखा कितना मस्त बनाया है रेसिडेंशियल रीजन में. सिक्स कहेगा बंगाल इतना छोटा सा स्विमिंग पूल, क्या मजा. गार्डन तो देखो इतना टॉय गार्डन जैसा. Different people, different responses to the same thing, to the same information, and then they develop individually different or diverse opinion. So it's very important, it is essential that the opinions created should be true. They are true, firm, strong, and impartial, unbiased, right? If the print media presents biased or false information to the public in their newspaper, अगर यही newspaper journals वाले, pamphlets वाले अगर हम तक गलत मैसेज पहुंचाएंगे, then it is possible to create a false public opinion. तो नेशनली पब्लिक ओपिनियन गलत ही होगा, वो वही ओपिनियन बनाएगा जो उसने रीड किया.
It's absolutely important और essential to have freedom of press. तो जो रिपोर्टर्स हैं, जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए कि वो कहीं पे किसी के दबाव में ना आ जाए, कोई उनको डराए धमकाए नहीं. They should do their work in full independency, in full freedom, so that a false public opinion is not created by presenting only achievements of the government and thereby hiding the faults, failures, shortcomings of the government. अब गवर्नमेंट के या किसी पार्टी के डराने धमकाने पे अगर गलत वो मीडिया, प्रेस मीडिया अगर कुछ गलत मैसेज हम तक पहुंचाएगी कि भाई जो अच्छी चीज है गवर्नमेंट की वही पब्लिश करनी है, जो गलत है उसे छिपाना है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग. यू विल बी ड्रैग्ड ऑन द रॉन्ग पाथ. पब्लिक को सही रास्ता दिखाने वाले पब्लिक प्रिंट मीडिया ही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सो दे आर द पीपल हु हैव टू फ्रेम द राइट ओपिनियन, गिव अस द राइट इंफॉर्मेशन, ताकि हम पब्लिक एक हमारा प्रॉपर ओपिनियन हम फ्रेम कर सके फॉर द पार्टीज, फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर द गवर्नमेंट. Ours is a diverse nation in terms of language, color, creed, region, religion, culture, varieties. हमारे वैरायटी है हर एक चीज में. द रीजनल न्यूज़पेपर्स, अब हजारों लैंग्वेज, अलग अलग एरिया, रीजन के अलग अलग भाषा के न्यूज़पेपर्स, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ऑफ कोर्स एट द टॉप. तो द रीजनल न्यूज़पेपर्स आर मच सॉट आफ्टर इन करस्पॉन्डिंग रीजन. अब जहाँ पे इंटीरियर है वहां पे लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आती है, सारे लैंग्वेज नहीं आते, कॉमन है हमारी हिंदी और इंग्लिश, अगर ये नहीं आता उनको तो उनकी भाषा के पेपर्स भी बहुत चलते हैं, वहीं से वो ओपिनियन फ्रेम करते हैं. रीजनल न्यूज़पेपर्स देन हैव a great, that is an immense contribution in cultivating public opinion. तो यही जो छोटे 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 गांव में जो न्यूज़पेपर्स या जो अलग अलग भाषाओं में रीजनल न्यूज़पेपर्स जो छपते रहते हैं, वो उनका काम तो बहुत बड़ा है in cultivating public opinion. Print media has failed in cultivating public opinion in countries and regions having less literacy rate. लेकिन प्रिंट मीडिया उस जगह पे फेल हो जाती है जहां पे लिटरेसी रेट लो है. उस एरिया में प्रिंट मीडिया काम नहीं करती पब्लिक ओपिनियन, राइट पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करने में, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है. In spite of these various organizations, industrial groups and political parties also publish their own dailies or periodicals owing to the influence exerted by printed material. अब ऐसे कई इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनके खुद के जर्नल्स या डेली पेपर्स या पीरियडिकल्स छपते रहते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो पब्लिशेस वेरियस पीरियडिकल्स एंड इश्यूज प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो ये सारा छपता रहता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय प्रिंटेड मटेरियल. और गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है अलग अलग पीरियडिकल, gives us important information about the country and the world. अब आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी अबाउट इट. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट्स ऑडियो विजुअल मीडिया like TV, radio, movies, the cinema, etc. are important in cultivating public opinion, right? And electronic media is more effective in the regions of lower literacy rate. अब जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत लो है, पढ़े लिखे बहुत कम है, जैसे दूर कहीं गांव में, वहां पे टीवी रेडियो बहुत काम आ जाता है. इट इज सीन दैट रेडियो एंड टीवी आर कंसिडर्ड फार मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स, क्योंकि वहां पे तुम्हें लिटरेसी की जरूरत नहीं पड़ती. तुम्हें तुम्हारी भाषा आती है, तुम्हें हिंदी भी आती है, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं, सुन के समझ सकते हो, तो फिर उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है. तो उन तक रेडियो टीवी सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाती है वर्ल्ड ओवर के और कंट्री के. ऑफ कोर्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंसिडेंट्स अकरिंग नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली कैन बी आल्सो मेड इजीली अवेलेबल थ्रू मीडियम्स ऑफ रेडियो एंड टीवी. और रेडियो और टीवी तो हमें डेली जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं वर्ल्ड में, हमारे कंट्री के, वो सारे लाइव टेलीकास्ट होते रहते हैं. Public opinion can be created through serial dramas, movies, which can help portray socio-economic as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation, poverty in an entertaining manner. अब पब्लिक का ओपिनियन किससे और बनता है? जैसे सीरियल हम देखते हैं, लोगों का ओपिनियन गलत बना, सास बहू, सास तो ऐसी होती है, अरे भाई कई बार बहू भी बुरी होती है. अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि दोनों अच्छे हैं, बट ये दोनों बिगड़े क्यों? क्योंकि कहीं और उन्होंने ये देखा, रियलिटी में सास बहू तो अच्छे ही हैं, लेकिन उनके रिलेशन क्यों कभी अच्छे नहीं हुए? रीजन इज दे कीप ऑन सीइंग दिस यूजलेस सीरियल्स एंड ऑल ऑन टीवी. सास बहू सीरियल देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 5-5 6-6 साल तक, कुमकुम भाग्य एंड बस. मुझे तो ये कहीं मैं ऐड सुनती रहती हूँ कई बार टीवी पे,
व्हाट नॉट, बहुत सारी सीरीज आती है सास बहू वाली, और जिसमें सारे मेन बेवकूफ, सारी लेडीज चतुर, ऐसे हमेशा बताते हैं। कभी कभी बीच बीच में चलता है तो मैं देख लेती हूँ कि चलो देखते हैं, टाइम पास हंसने के लिए भी ऐसी सास बहू की सीरियल देखनी चाहिए कभी। फिर ड्रामास हम देखते हैं, मूवीज, हिंदी मूवीज देखते हैं। इट्स ऑल फेक, इट्स नॉट अ रियल लाइफ, स्टिल वी सी इट, right? Why not see some good movies and grasp something from it, like Tare Zameen Pe, Three Idiots, and ऐसी सारी movies, you can say, एक बहुत अच्छी आई थी दंगल, फिर नाइस मूवी ऑन विमेन एम्पावरमेंट भी कई आई थी, फिर एक हिचकी करके आई थी रानी मुखर्जी की, तो काफी चली नहीं थी, बट यस इट वाज टू गुड. So these are the movies where people are least interested. When I saw the movie Tare Zameen Pe, that day I was super duper happy. The only reason was I was so overexcited कि wow, अब मम्मियाँ सुधर जाएगी, अब वो लोग बच्चों को साइंस लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, ये थोड़ा कम हो जाएगा. बट वर्ल्ड इज सेम, द वर्ल्ड नेवर चेंजेस ड्यू टू, हाँ अच्छी बात है वो हम ग्रेस्प नहीं करते, लेकिन जो गलत है दैट वी पिक अप वेरी सून, लाइक दिस सास बहू, राइट? तो ये हमारे कई बार हमारे, हाँ देर आर गुड मूवीज एज आई टोल्ड यू, जैसे जो हमारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में ये मूवीज हमें बताती है, अनटचेबिलिटी के बारे में, डाउरी, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी इन एन एंटरटेनिंग मैनर, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं होता और उसे भूल जाते हैं तुरंत थिएटर के बाहर आते या सीरियल देखने के बाद, लेकिन वो सीरियल याद रह जाती है जो बेकार की है, लड़ाई झगड़ा करवाती रहती है, राइट? In today's world, apart from TV, the arrival and spread of internet has helped people to enjoy news, serials, dramas, movies, sitting comfortably not only in their bedroom, but बाकी काफी सारे छोटे मोटे रूम्स हैं. अब तुम ही अंदाजा लगा लो कौन कौन से रूम में जाके तुम अपना सेलफोन लेके जाते हो अंदर और देखते रहते हो आराम से आधा आधा घंटे तक. तो बहुत सारे रूम हैं, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, आगे तुम बना लो काफी रूम, तुम्हें पता है कहाँ कौन से रूम में तुम लेके जाते हो, ठीक है? तो दिस आर, मतलब कि अपने पाम पे आज पूरे वर्ल्ड तुम देख सकते हो, बट टेक इट पॉजिटिवली एंड इट गिव्स यू नॉलेज. टेक इट ओनली फॉर प्लेइंग गेम्स एंड यू नो दोज यूट्यूब एंड टाइम पास वाले कुछ देखते रहना, उस पे रिविजन करते रहो बेकार सीरियल्स की. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ कोर्स. All this media can create a negative, that is adverse impact. एक गलत इफेक्ट होगा through the presentation of distorted, गलत, obscene, dirty, violent information. तो ये सारे मीडियाज अगर हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट हम पे गलत होगा. तो हमें ये देखना है, एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कुछ गलत आ जाए तो दे हैव टू फाइट. जैसे थोड़े टाइम पहले, आई थिंक सो मे बी अबाउट 2-3 years बैक, देयर वाज वन मारवाड़ी, मतलब हिंदी सीरियल बट इन अ मारवाड़ी बैकग्राउंड, ऐसा बताया गया था जहाँ पे लड़की बड़ी है कुछ 20-21 साल की और उसका हस्बैंड बताया गया है कुछ 12-13 साल का लड़का. तो विद इन 2-3 वीक्स लेडी पॉलिटिशियन ने बहुत ही रिवोल्ट किया, बिकॉज नेचुरली इट हैज सच अ रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन ऑफ यू नो, जो देखते हैं इसे, घर में एक गलत माहौल खड़ा हो जाता है. तो बंद करवा दिया उस सीरियल को एंड दैट वाज वेरी गुड. आई वाज वेरी हैप्पी कि ये गलत चीजें बंद हो जानी चाहिए. इतनी वायलेंस वाले दिखाते हैं, क्राइम पेट्रोल एंड व्हाट नॉट, पता नहीं बच्चे अगर देखे तो डर जाए बेचारे. So it has a very negative impact on the mind of not only small children but also on the big people. इतनी वायलेंस बताते हैं वो, डर्टीनेस, वायलेंस से ज्यादा डर्टीनेस दे शो. सो आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट. सो टीवी तो मैं हार्डली आई सी. And in a democracy, it is desirable that the political parties and NGOs, that is non-government organizations, protest against various, as I told you, obscene and violent programs. They should fight against such programs telecasted by the electronic media, that is TV, etc. Today, in the fast-moving age of technology, people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smartphone and exchange your thoughts as well as ideas. तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी है इन दिस टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड. स्मार्टफोन, हमारे थॉट्स स्पीडली हम भेज सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल, थ्रू मेनी थिंग्स. हमारे आइडियाज हम पहुंचा सकते हैं वर्ल्ड ओवर.
Electronic media is widely used to cultivate public opinion. TV, radio, personalized radio, etc. FM plays a special role, that is great role in cultivating public opinion in modern times. In today's time, rumors spread instantaneously, मतलब speedily. ये स्पीड से जो rumors फैल जाते हैं in the absence of facts and details, सच्चाई तो है ही नहीं, ना डिटेल है. तुमने कभी किसी को क्वेश्चन भी नहीं पूछा, भाई सही सुना है, तुमने देखा, तुमने सुना. Sometimes if I give some news to about someone to Rohit sir, he will always say, हमने जब अपनी आंखों से जब तक हम नहीं देखते और अपने कानों से नहीं सुनते तब तक मानना नहीं है उस चीज को. It's always a rumor. Hence, there remains a danger of false public opinion being generated. तो गलत पब्लिक ओपिनियन फ्रेम होते हैं किसी अच्छे लोगों के बारे में. Various types of surveys are carried out by electronic media help create public opinion. फिर तो हम देखते रहते हैं टीवी पे भी कि अलग अलग पब्लिक पोल होता है, सर्वेस कैरी आउट होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं पब्लिक को और उनका ओपिनियन फ्रेम होता है, हम तक उनका ओपिनियन पहुंचाते हैं. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन. Surveys are carried out to know public opinion with the help of some details. Opinion polls are presented during election. Opinion polls help to estimate the direction of public opinion. अब ओपिनियन पोल के थ्रू में पता चलता है कि लोगों का ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, और शायद से अप्रॉक्स वी कम टू नो फ्यू डेज बिफोर कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी लोगों के ओपिनियन पे. दैट इज कॉल्ड ओपिनियन पोल. ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल, लेकिन हर बार ये नहीं होता, वो गलत भी कभी साबित होता है. वो जो ओपिनियन पोल हम जो कैरी आउट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, लोगों का ओपिनियन हम लेते हैं, वो कभी गलत भी साबित होता है. दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल. यू कैन डिपेंड ऑलवेज ऑन इट. फॉल्स हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज टाइम. In a democracy, the people and the government should exercise patience. Electronic media helps to transit people's thoughts, views, ideas, details, and talks to the government. तो हमारी सोच गवर्नमेंट तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंचाती है, and similarly helps to transmit details about the various plans and achievements of the government to the people. और वैसे ही गवर्नमेंट के सारे प्लान्स एंड अचीवमेंट हम तक वो पहुंचाती है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. रेडियो कैन रीच इन डिस्टेंट एंड रिमोट एरियाज. बहुत ही हिली माउंटेन्स रीजन हो, फॉरेस्ट एरिया हो, तो वहां तक रेडियो पहुंच सकता है, वो न्यूज फैलाता है वहां तक. एंड बट एज इट इज ओनली ऑडियो मीडिया, इट हैज बीन लेस इफेक्टिव. लेकिन टीवी से रेडियो कम इफेक्टिव है क्योंकि वो सिर्फ ऑडियो है. वीडियो एंड ऑडियो बोथ, लाइक टीवी, सिनेमा, दैट इज मूवीज, very effective it is. TV program, though expensive in nature, have gained more public viewership than radio. Public viewership मतलब ज्यादा लोग व्यू करते हैं, देखते हैं टीवी को. रेडियो से टीवी महंगा है नेचुरली, बट yet people have accepted it than radio. In a democracy, it is desirable, acceptable that public opinion should be cultivated so as to cater or fulfill to the needs of the welfare of the nation. तो बहुत ही ज़रूरी है कि पब्लिक ओपिनियन हमें क्रिएट करना ही होगा, कल्टिवेट करना होगा, ताकि सो एज टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द नेशन, ताकि कंट्री में अच्छा हो, लोगों की नीड्स जो है वो फुलफिल गवर्नमेंट कर सके. Now there are different types of democracies, so let's see about it. So let's see about the types of democracy. That is, various countries in the world have democracy. मैंने कहा था एक है parliamentary और एक है presidential. Now there still exists diversity within various democratic countries or democracies of different countries. मतलब है तो सारी countries, बहुत सारी countries democratic countries, लेकिन उनके governance में starting of the chapter में हमने किया था, the way of ruling is different. Our country is parliamentary democratic system. In a country like USA, they have presidential parliamentary system. Let's see about it. Very important for a 3 marker or sometimes ask for 2 marker also. About types of democracy, तो पूरा लिखना है या differentiate between parliamentary and presidential is provided to you in your notes. Parliamentary democracy. Our country has accepted the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in the Lok Sabha as the PM. अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि जो पार्टी जीतेगी, राइट, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट उस लीडर को पीएम बनाएगा जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट से इन लोकसभा जो जीता है. अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हु गेट्स द मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एज पीएम. द पीएम विल फॉर्म द गवर्नमेंट.
द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में कोई भी क्वेश्चन रेज होते हैं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को जवाब देना है. दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर कंप्लीटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा. Government remains in power as long as it enjoys the confidence of the majority of the members of parliament. अब members of parliament जब तक उनका सपोर्ट है तब तक गवर्नमेंट पावर में रहेगी, अदरवाइज नो. Presidential democracy is different. Is the second presidential democracy is the second type of democracy. In such type of democracy, president is directly elected by the people, right? President remains in power for a specific time period as mentioned in the constitution, like 5 years. Presidential democracy is existing in many countries, including USA. The election system, your detailed 4 marker, very, very important. Learn it. समझ लो पहले. Election system in democracy. Our country's maximum number of voters in the world. Election Commission maintains the administration, control, monitoring of the entire process of election. तो पूरा हमारा election process जो है वो कौन हैंडल कर रहा है? इलेक्शन कमीशन. इट इज एसेंशियल फॉर एनी डेमोक्रेसी दैट इज इलेक्शन कमीशन शुड बी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, इन सिंगल, ऑटोनॉमस. इट शुड नॉट बी पार्शियल, इट शुड नॉट बी लिंक्ड विद समवन, राइट? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा ये वोटिंग सिस्टम है, राइट? एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज डन बाय इलेक्शन कमीशन. The National Election Commission will have to be very much independent, impartial, and autonomous. It's compulsory, it's mandatory to maintain the autonomy of the Election Commission. In the Constitution, there is special provision for the terms and conditions of appointing Election Commissioner. तो हमारे Constitution में clearly लिखा गया है, provide किया गया है कि Election Commissioner को कैसे appoint करना है. There are criteria for service, मतलब कि सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए इलेक्शन कमिश्नर के सर्विस के. कब उसको कैसे निकाल सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम देयर सर्विस. एवरीथिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज प्रोवाइडेड. एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर द इलेक्शन कमिश्नर. रिमूवल, सस्पेंशन, अपॉइंटमेंट, सर्विस क्राइटेरिया एटसेट्रा. The responsibility and authority to hold election for the parliament, assembly, council, president, vice president, rest, that is, it is in the hands of election commission. तो किसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और राइट है, ऑथोरिटी है कि ये सारे इलेक्शन हैंडल करें? इलेक्शन कमीशन. द इलेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट, वो तो आपको पता है. एलए और द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 years. तो लोकसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल, लोकसभा कंट्री लेवल. तो वो 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा, फ्रेश इलेक्शन होगी. लेकिन काउंसिल और राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट लेवल, जो हर स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है. जैसे गुजरात के पास नहीं है, महाराष्ट्र के पास है वैसे. और कंट्री लेवल पे नेशनली एक सिंगल राज्यसभा, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इज परमानेंट. सो फ्रेश इलेक्शंस आर कैरिड आउट ऑफ एलए एंड लोकसभा. इलेक्शंस कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट प्लेस due to death or resignation of the candidate is called by-election. Very, very important. Learn it. What is by-election? By-election मतलब अगर death of a particular candidate या resignation of that candidate की वजह से, अगर किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी वो अभी पावर में है, उसके वो अपने हाउस में है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा वॉटएवर, और उसकी डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे, तो वो जो वैक्यूल प्लेस है, मतलब जो सीट वेकेंट हुई है, तो उसके लिए जो इलेक्शन होगा, अब 5 साल पूरे भी नहीं हुए उस कैंडिडेट के, कहीं इन द मिड ऑफ दिस 5 years रूलिंग टाइम कुछ हो जाए उसे या वो रिजाइन कर दे, तो वो वेकेंट सीट के लिए इलेक्शन होगा, जिसको हम कहते हैं इज नोन एज बाय इलेक्शन. द डेज ऑफ इलेक्शन इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक को कि इलेक्शन की डेट कौन सी होगी. एडवर्टीजमेंट होगी. फिलिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग द नॉमिनेशन फॉर्म्स. अब जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उससे, जैसे तुम अपना जब फॉर्म भरोगे तो उसको स्कूल वाले देखते हैं कि भाई ठीक से फिलअप किया है या नहीं, स्क्रूटिनाइज करेंगे, चेक करेंगे द नॉमिनेशन फॉर्म्स. द डेज फॉर विड्रॉइंग द नॉमिनेशन फॉर्म्स. अब तुमने फॉर्म दे तो दिया, लेकिन अब तुम्हें यू डोंट वांट टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट, तो तुम विड्रॉ भी कर सकते हो, तो उसकी डेट्स अलग है. डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट. अब एग्जैक्टली कौन कौन कैंडिडेट कौन से एरिया में खड़े रह रहे हैं फॉर इलेक्शन, वो फाइनल लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा हमारे सामने, पब्लिक के सामने.
The allotment of election symbols, फिर हर एक पार्टी को अपना उनका सिंबल, मतलब उस कैंडिडेट को उसका सिंबल दिया जाएगा, एक्सेट्रा, falls under the work area of election commission. ये सारा काम election commission का है. From the time of announcement of election dates, a protocol is implemented, a rule, regulations are implemented by election commission. The government is supposed or bound to abide, that is, follow this protocol. That is, they are bound to abide by the protocol, means they have to follow this terms and condition of the election commission and not carry out any activity or campaigning that can affect the public opinion wrongly. और गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को इलेक्शन के पहले कोई ऐसी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करनी है, कैंपेनिंग ऐसा वाला नहीं करना है जो पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करे रॉन्गली, नेगेटिवली. द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज कम अप विद देयर ओन इलेक्शन मैनिफेस्टो. सब अपने अपने होर्डिंग्स लेके निकलते हैं, अपने अपने स्लोगन लेके निकलते हैं. आजकल तो मास मीडिया है, तो उसी के थ्रू वो हम तक पहुंचते हैं. एंड द इलेक्शन मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट द प्रपोज्ड प्लान. फिर यही वापस पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, मतलब कि इलेक्शन के पहले दे मीट द कॉमन पब्लिक, दे गो इन डिफरेंट एरियाज, और वो क्या करना चाहेंगे जब जीत के आएंगे, तो क्या करेंगे वो अपने कंट्री के लिए, अपने एरिया के लिए जहां से वो जीत के आएंगे, तो वो लोगों को अपने प्लान्स बता रहे हैं. सो इलेक्शन मैनिफेस्टो विल टेल अस अबाउट व्हाट it reflects the proposed plans and works of that party or candidate in terms of economic development, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड वेरियस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे वो पब्लिक को बताते हैं मीटिंग में. सीक्रेट बैलेट इन अ डेमोक्रेसी, very interesting again, short note of course. In our country elections are conducted in a completely independent and secret manner. ये तो फिर से तुम्हें पता ही है. Indian parliamentary elections are considered to be the largest election process in the world. और हमारा largest democratic wall है, largest election process in the world है हमारा. Indian parliamentary elections are considered to be the largest election process in the world. Various political parties, organizations, independent candidates contest the election. फिर सब election contest करते हैं. Each of them present their work, ideas, future plan to the voters. हम तक ये सारे लोग जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, वो हम तक आइडियाज पहुंचा रहे हैं. And they tell us that what work they are going to do, what are their future plans. They will tell it to the voters. So now as we move ahead towards the secret ballot in democracy. Secret ballot तो ऐसे मैंने बताया सबको पता है. In our country, elections are conducted in a complete independent and secret manner. Nobody can force any Indian citizen to vote a particular candidate or a party. और secret way हो रहा है. Indian parliamentary elections are considered said to be the largest election process in the world. ये तो बहुत बार हमने ये चैप्टर में किया. That Indian parliamentary election are the said to be the largest election process in the world. Various political parties, organizations, independent candidates, they contest the election. Each of them, ये हमने कर लिया है, but let's just revise it. That each of them present their work, ideas, future plan to the voters. It is expected that the voters vote without any benefit, greed or fear. अब हमें कैसे वोट करना है? तो without any greed, fear or benefit, independently, किसी के प्रेशर में आके नहीं या किसी लालच की वजह से नहीं. Secret ballot is given utmost importance in a democratic country. A voter has the right to maintain the secrecy of his vote. No one can ask the voter regarding his vote कि भाई तुमने किससे वोट दिया. The amazing process of election maintains the secrecy of each voter's vote. और ये इलेक्शन प्रोसेस इतना अमेजिंग है कि हर एक वोटर के वोट की सीक्रेसी रखी जाएगी. The election commission facilitates, means provides the facility of the voting of all people involved with the election process as well as the army personnel too. मतलब सारे लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है जो इलेक्शन प्रोसेस के साथ कनेक्टेड हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं सीक्रेटली. Two processes are used for voting: ballot paper, जो पहले के जमाने में होता था, अब EVM, electronic voting machine. Counting ballot papers is more time consuming, paper consuming. Nowadays, most of the voting is carried out through EVM, that is electronic voting machines. Counting vote in EVM is less time consuming. It saves time, labor, paper. Voting by using EVM is environment friendly, as I told you just now, as it does not make use of the paper. If a voter decides to exercise his right to vote but not to cast his vote, मतलब voting right उसे मिली है, तो मैं या तुम as a voter, अगर हमें वोट देने जाना है
लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, बस सिर्फ हमारी राइट फुलफिल करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है वो राइट. सो इफ अ वोटर डिसाइड्स टू एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बट नॉट टू कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ही कैन यूज द ऑप्शन ऑफ नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव बटन प्रेस करके बाहर निकल जाएंगे. क्लियर? लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज इन अ कंट्री. रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी. देखते हैं क्या है ये. डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. डिस्कस 2 मार्क. तो पूरा लिख लो ये पैराग्राफ. सो इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. बहुत सारी अलग टाइप की पार्टीज हैं हमारे यहाँ, जैसे शिवसेना, देन वी हैव बीजेपी, कांग्रेस. कई कंट्री लेवल पे है, कई स्टेट लेवल पे है, कई रीजनल लेवल पे है. एंड हेंस वी हैव वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. Why we have various political parties? Because India is a multi-party democracy, and therefore it is said. Hence, and therefore we have various political parties. Specific terms and conditions, that is criteria, are fixed by the Election Commission to validate any political party. एक particular political party, एक particular party political party बन सकती है या नहीं, और फिर वो रीजनल पार्टी कहलाएगी या नेशनल पार्टी, वो कौन डिसाइड करेगा? Election Commission. Based on fixed rules, terms, condition, a specific criteria. Political parties are classified either as national or regional party based on some fixed policies or criteria, as I told you just now, decided by Election Commission. As per this, learn it. First of all, understand. Very important. As per this criteria of the Election Commission, a party that secures more than 4% of the total vote in the previous general election in at least 4 major states is said to be a national party, and the rest are said to be regional parties. वो पार्टी जिससे 4% से ज्यादा वोट मिले हैं आउट ऑफ द टोटल वोट्स इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शन, एंड वो भी एटलीस्ट इन 4 मेजर स्टेट्स, बड़े 4 मेजर स्टेट में एटलीस्ट उसे 4% से ज्यादा प्रीवियस जनरल इलेक्शन में वोट सिक्योर किए हैं आउट ऑफ द टोटल वोट्स, तो उस पार्टी को हम कहेंगे नेशनल पार्टी. उससे कम तो regional party. As per the information given by the Election Commission by March 10, 2014, a total of 1,593 national parties were registered. Just imagine. Last year, 239 parties were added. Let's see now. Learn it. In our country, Indian National Congress. सारे abbreviation के full form learn करना. In our country, Indian National Congress (INC) and Bharatiya Janata Party (BJP) are the 2 major political parties. Right? Along with this, Bahujan Samajwadi Party (BSP), Communist Party of India (Marxist) (CPIM), and National Congress Party (NCP) are the other national parties. Apart from this, the Shiv Sena, Trinamool Congress, Samajwadi Party (SP), Dravida Munnetra Kalagam (DMK), All India Anna Dravida Munnetra Kalagam, that is AI, ADMK, आम आदमी पार्टी AAP, जनता दल यूनाइटेड JDU, राष्ट्रीय जनता दल RJD, is called राष्ट्रीय जनता दल RJD, are regional parties. वो national party नहीं है. Based on the fixed or specific criteria or rules and regulation, terms and condition, any national party can lose its status as a national party and can become regional party. कभी भी, क्योंकि वो terms and conditions उसके fulfill नहीं हुए, वो 4% से ज्यादा वाले एंड एटलीस्ट 4 मेजर स्टेट वाले, और वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शन, तो नेशनल पार्टी से रीजनल पार्टी बन जाएगी. और कई बार रीजनल पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रही है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो वो ही रीजनल पार्टी बन जाएगी नेशनल पार्टी. हो सकता है ऐसे. सो बेस्ड ऑन दी स्पेसिफाइड, दैट इज फिक्स्ड क्राइटेरिया, any national party can lose the status or any regional party can gain the status of the national party depending on the number of votes obtained by the party. The party forming the government is known as the ruling party. The party which forms the opposition is called the opposition party. जो रूल करेगी एज प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. ऑपोजिशन करने वाली पार्टी को हम कहेंगे ऑपोजिशन पार्टी. तो ऑपोजिशन पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है, लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को ऑन टोज रखेगी, अलर्ट रखेगी कि भाई वो अपोज करेगी अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऑपोजिशन पार्टी इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री. The opposition party helps form public opinion by democratically opposing the objectionable plan. कोई प्लान या प्रोजेक्ट्स या पॉलिसीज गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन वाले, तो ऑपोजिशन पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी, अपोज करेगी, पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करवाएगी. बट इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और डिजायरेबल.
So it is very desirable that the opposition party supports the social and public causes of the ruling party which are aimed at the welfare of the country. अगर रूलिंग पार्टी कंट्री के भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो ऑपोजिशन पार्टी को हेल्दीली प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है रूलिंग पार्टी को, नहीं कि हर बार अपोज करना है. एंड द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी. हमारे ऑपोजिशन पार्टी एनिमी पार्टी जैसी दिखाई देती है, जबकि हमें करना क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना है बिटवीन द रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी. They should work as the two wheels of a chariot. Effective and strong opposition party is a prerequisite of a good democracy. तो opposition party effective होनी चाहिए, strong होनी चाहिए, which is a prerequisite, मतलब necessity. It is a pre-requirement of a good democracy. Democracy is like a chariot. Ruling party and opposition party are the two wheels of this chariot, right? So very important. They might ask you for 2 marker. Explain that ruling party and opposition party, the two wheels of the chariot, and democracy is like a chariot. Explain the following. तो पूरा ये पार्ट लिखना है, पैराग्राफ, राइट? सो काफी लंबा लेक्चर हो गया है, बट एक्चुअली देयर वर फ्यू कॉल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस कि कई स्कूल में ये 12th चैप्टर 2-3 दिन में उनकी एग्जाम है. सो सॉरी, आई हैड एक्चुअली डिसाइडेड टू स्टार्ट विथ इफ आई वर यू, और पूरी मेरी तैयारी भी हो चुकी थी स्मार्ट बोर्ड पे उसकी, विथ योर एडिशनल एनिमेटेड वीडियो आल्सो टू बी अटैच्ड टू दैट स्टोरी, बट वंस अगेन सॉरी फॉर इट. विल डू इट आफ्टर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक विथ ग्रामर, एंड बीच में कहीं पे इफ आई वर यू एक इंग्लिश थोड़ी रिलैक्सेशन के लिए एक चैप्टर ले लेंगे, तो तुम एनिमेटेड वीडियो भी देख पाओगे. इट बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलैक्सेशन वाला वीडियो लेक्चर और एनिमेटेड वीडियो होगा. बट फॉर दिस टाइम इमरजेंसी में ये मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ी फॉर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट. तो वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर ले, बाकी के सब बच्चे भी इसका फायदा उठाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. टेक केयर. System of elections in India. In this module, you will understand and analyze the system of elections in India. With a population of over 1.21 billion, India is the largest democracy in the world. Evidently, the largest democratic electoral exercise in the world is also conducted here. Let us find out how it is done. Elections are held at regular intervals to select representatives of the people. Through elections, people can also reject the representatives who had been chosen in the previous election if they are not satisfied with their performance. When elections are held across a country to elect representatives to the national lawmaking body, that is, the parliament, they are known as general elections. When elections are held to elect representatives to the state lawmaking body, they are known as assembly elections. Sometimes, by-elections are held between 2 regular elections in order to select a new representative. By-elections take place when the representative already chosen in regular elections is unable to function properly in that capacity anymore due to some reason. For the general elections, our country has been divided into 543 territorial divisions known as constituencies. People residing in a constituency elect one person from among different candidates who represent them in the Lok Sabha, which is the lower house of the parliament. For assembly elections, the states are further divided into smaller constituencies and a representative is elected from each one of them to the respective state legislative assembly. Some constituencies are reserved for weaker sections of the society who cannot compete with other candidates due to lack of resources such as money, social status, influence, or because of their gender. Weaker sections include scheduled castes, scheduled tribes, and women. The makers of the Indian Constitution came up with a system of reserved constituencies for adequate representation of the weaker sections. In reserved constituencies, only candidates belonging to a particular weaker section can participate in
and contest the elections. This makes the system of elections more representative and more democratic. Once the demarcation of constituencies is done, the electoral roll is prepared. The electoral roll is commonly known as the voters' list. The electoral roll is a list of all the people in each constituency who are registered to vote in the elections. Only those who have their names on the electoral roll are allowed to vote. The electoral roll is revised regularly to add the names of new voters and remove the names of those who do not belong to that constituency anymore. A person who is eligible to vote but does not have his name registered on the electoral roll can apply to the electoral registration officer of his constituency. The officer in response updates the register accordingly. With a list of constituencies and voters in place, the country can go for elections when they are due. The notification for elections is issued by a constitutional authority. This constitutional authority is called the Election Commission of India in our country. The process of nominating candidates in different constituencies begins soon after the notification for elections is released. A person contesting under a political party is nominated by that party. Individual candidates may also contest elections independently without the support of any political party. Anyone who wishes to contest the elections has to fill the nomination form and pay a security deposit. He or she must be at least 25 years of age. All candidates are required to make a legal declaration regarding their assets and liabilities, educational qualification and criminal cases, if any, pending against them. This information is put into public domain so that voters can make an informed decision about their representatives. After the nomination of candidates, campaigning for the elections begins. In this phase, the nominated candidates interact with the voters and address gatherings to mobilize support in their favor. Campaigning also gives people a chance to know the candidates better and choose the best representative from among a number of candidates. In a democracy, every candidate is free to conduct their election campaign whichever way they want to. However, on certain occasions it may become necessary to regulate campaigns in order to ensure that the process is fair and equitable. For this, there is a model code of conduct in place. A model code of conduct regulates the actions of the candidates contesting elections and their campaigning activities. Any candidate breaching the code of conduct may be disqualified from the elections and not allowed to contest further. The election day is the day when voters cast their vote. Earlier, ballot papers were used for this purpose. Now they have been replaced by electronic voting machines, EVMs. Once the polling is over, all electronic voting machines are sealed and taken to a secure place. They are opened and the votes secured by each candidate are counted. The candidates getting the maximum number of votes in each constituency are declared winners. In a general election, the counting of votes in all constituencies usually takes place at the same time on the same day. After it becomes clear who the winning candidates are, the political party with the maximum number of winning candidates forms the government. Let's recap. Elections are held at regular intervals to select representatives of the people. Through elections, people can also reject the representatives who had been elected in the previous elections if they are not satisfied with their performance. General elections are held across the country, whereas assembly elections are held within states. By-elections are held between two general elections to fill a vacancy. A constituency is a territorial division comprising a group of voters. In reserved constituencies, only candidates belonging to a particular community can contest and win elections. The electoral roll or the voters' list is a list of all the people in each constituency who are registered to vote in the elections. Every eligible person who wishes to contest the elections has to fill the nomination form and pay some money as security deposit.
Candidates are also required to declare their assets and liabilities, educational qualification and criminal cases pending against them. During the stage of campaigning, candidates interact with the voters and address gatherings to mobilize support in their favor. Any candidate flouting the model code of conduct may be disqualified from the elections and not allowed to contest further. After voters cast their votes, the candidates getting the maximum number of votes in each constituency are declared winners. Political outcomes of democracy. In this module, you will evaluate the political outcomes of democracy. Have you ever wondered why democracy is preferable to other forms of government? Wondering why everyone goes gaga over democracy in spite of its problems and confusions? Democracy is considered to be better than monarchy or dictatorship because it upholds equality among citizens, promotes the dignity of individuals, improves the quality of decision-making, offers a legitimate method to resolve conflicts, and gives scope for correcting mistakes. There is an overwhelming support for democracy across the world today. Why is that so? Because it gives power to the people. But does that make democracy capable of solving all political, economic, and social problems of the masses? While democracy is seen to be good in principle, it is not seen to be good in practice. The unmet expectations from democracy often lead us to question the idea of democracy and blame it for all the problems. We must understand that democracy can only create the conditions necessary for solving the problems of the citizens. Citizens of a democracy are expected to take advantage of these conditions in order to solve their problems. Democracy promises certain political, economic, and social outcomes that aid in solving the problems of the people. What political outcomes can we expect from democracy? Let us find out. The most basic political outcome of democracy is that it produces a government which is accountable to its citizens. It does so through a process of free, fair, and regular elections. Democracy ensures that people have the right to choose. The second political outcome of democracy is a responsive government. This attribute may often cause it to become less efficient. But democracy is based on the idea of open public debate, deliberation, and negotiation. It may take more time to follow procedures before arriving at a decision, but it is acceptable to all, and so in the end, it's more effective than a dictatorship where decisions are imposed on the masses without hearing them out and which may lead to resistance later on. The third political outcome of democracy is a legitimate government. Democracy makes sure that the decisions taken are based on the norms and procedures which take due consideration of the voice of the people. In democracy, citizens have the right and the means to examine the process of decision-making. This level of transparency sets it apart from the non-democratic governments and is the reason for an overwhelming support towards democracy, which dictatorship does not enjoy. Thus, the political outcomes of democracy can be measured on the basis of regular, free and fair elections, open public debate, and citizens' right to information about government and its work. Democracies around the world do not always have a perfect record on each of these counts. While democracies may hold free and regular elections, not everyone gets a fair chance, and not every decision is subjected to public debate. Democratic governments do not have a flawless record in sharing information with the citizens. They are not always attentive to the needs of the people and ignore the demands of the majority. We also get to hear stories of corruption in democracies which prove that they are not free of this vice. All we can say is it's not perfect, but it is better than dictatorships in all these aspects. Moreover,
there is no evidence to show that non-democracies are better than democracy. Let's recap. Democracy is better than other forms of government because it upholds equality among citizens, promotes the dignity of individuals, improves the quality of decision-making, offers a legitimate method to resolve conflicts, and gives scope for correcting mistakes. Democracy can only create the conditions necessary for solving the problems of the citizens. Citizens are expected to take advantage of those conditions. The political outcomes of democracy are an accountable, responsive, and legitimate government by, for, and of the people. The political outcomes of democracy can be measured on the basis of regular, free and fair elections, open public debate, and citizens' right to information about government and its work. Democracies around the world do not have a perfect record on every political outcome. Let's take a look at some reasons why we prefer democracy over dictatorship. Democracy promotes equality among citizens and enhances the dignity of the individual. It improves the quality of decision-making, provides a method to resolve conflicts, and allows room for correction. Democracy is seen to be good in principle, but not in practice. We know that democratic countries the world over follow democracy differently, depending on their social situations, economic achievements, and cultures. However, there are certain basic outcomes we expect out of every democracy. As a political outcome of democracy, we expect an accountable, responsive, and legitimate government. As an economic outcome, we expect that democracies produce economic growth and development and reduce poverty and inequality. As a social outcome, we expect democracy to accommodate the social diversity in a society and provide dignity and freedom to all citizens. When such expectations are not met, we start blaming democracy. What we need to understand is that democracy is just a form of government. It can only create suitable conditions for us. As citizens, we have to take advantage of those conditions and achieve our goals. Democracy provides us the right to choose our rulers and have control over them. We expect that our rulers, the government, should be effective and efficient. An effective government follows procedures to arrive at decisions. Although this may be time-consuming, it ensures that the decisions are acceptable to all. Because the decision-making process is based on norms and procedures, citizens have the rights and means to examine the decisions. Thus, the government is accountable to its citizens. Further, we expect the government to be attentive to the needs of its people and be free of corruption. Keeping all these factors in mind, we can say that the expected political outcome of democracy is an accountable, responsive, and legitimate government. Let's see how we can measure each factor. The first measure of accountability is regular, free and fair elections. The second measure is open public debate on major policies and legislations. The third measure is the citizens' right to information about the government and its functioning. So, where do we stand on all these measures? Democracies have displayed a mixed record on each measure.
we do have regular elections and also public debates. But how effective are the elections and debates? Largely, democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with its citizens. The Right to Information (RTI) Act is a law enacted by the Parliament of India, giving citizens the right to access the records of the central government and the state governments. It was introduced to empower citizens to resist the misuse of authority and maintain transparency. Under the provisions of the Act, any citizen may request information from a public authority who is required to reply expeditiously or within 30 days. Let's look at the second factor of political outcome, responsiveness. We expect a government to be attentive to our needs and wants and to be free of corruption. So, how do most democracies fare on this outcome? Democracies often ignore the needs and wants of its citizens. Moreover, corruption is a rampant evil in most places. Democracies have been successful on the third factor, legitimacy. Although a democratic government may be slow, less efficient, and not always clean, it is a legitimate government because it is the people's own government. Democracy is the most preferred form of government based on its political outcome of accountability, responsiveness, and legitimacy. When we compare the growth rate of all democracies and dictatorships between 1950 and 2000, we see that democratic countries have underperformed as compared to dictatorial ones. However, when it comes to less developed countries, the difference between dictatorships and democracies is negligible. Along with good governance, we also expect democracies to create economic growth and development. While democracy does not guarantee economic development, we can expect democratic countries to speed up their economic development measures. Did you know India is the 12th largest economy in the world by market exchange rates? By 2008, India had established itself as the world's second fastest growing major economy. More than development, we expect democracies to reduce poverty and economic inequality. Now, we know that democracies are based on political equality. All individuals have equal power and hold equal weightage in electing representatives. Unfortunately, along with political equality, we find growing economic inequalities. For example, if you look at our own country, 1/3 of the global poor live in India despite the high economic growth rate. Did you know Tanzania is the third biggest gold producer in Africa, with decent economic growth? Yet, the country remains one of the poorest in the world. With the poor in majority, shouldn't democracy be a rule of the poor? The poor constitute a larger proportion of the voters, and every party focuses on them while campaigning. Yet, the democratically elected members do not address the problems of the poor, contrary to what one expects them to do. The situation is bad in several so-called democratic countries. More than half of the population in Bangladesh lives in poverty. People in several countries depend upon the rich countries even for their food supplies. On the whole, we can conclude that though democracies cannot remove inequality completely, we can minimize the degree of disparity
by progressive planning. Democracies usually develop procedures to accommodate various social divisions that exist within the country. To a large extent, this helps reduce explosive and violent tensions in society. The ability to handle social differences, divisions and conflicts is a distinct advantage of democracy. Thus, democracy is best suited to produce the first social outcome, accommodation of social diversity. To achieve this social outcome, a democracy must fulfill two conditions. The first condition is that the majority needs to work with the minority to help the government represent a general view of all citizens. Secondly, rule by majority does not mean rule by a certain religion, race, or linguistic group that is in majority. Majority rule should not lead to tyranny of the majority. Majority rule means that in case of every decision or election, different persons and groups can form a majority. Every citizen should have a chance of being in the majority at some point of time. Democracy also stands superior in the second social outcome, promoting dignity and freedom of the individual. All citizens should be equal before the law and have equal access to power. Conflicts arise when individuals are not treated with the respect they deserve. One of the chief elements of a democratic society is respect to and equal treatment of women. In a historically male-dominated society, women have struggled to gain the respect and equality they deserve. Thanks to a democratic setup, the principle of equality has a moral and legal recognition. It thus becomes easier for women to struggle against what is legally and morally unacceptable. Similarly, in a democracy, the disadvantaged and discriminated castes can also claim their right to equal status and equal opportunity. Although caste-based inequalities and atrocities continue to exist even today, they lack moral and legal foundations. People will always have expectations and complaints about the way democracy functions. This by itself is an indication that people have developed awareness and expect those in power to be accountable to citizens. Most people today realize that their vote matters. It gives them a say in the running of the government and ensures that their interests are protected. All in all, we can say that democracy has been largely successful in transforming people from mere bystanders into responsible citizens.